चलतु आज आम आरंभ करवा आमर इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू एवं समस्त प्रश्नर उत्तर देवाई चेष्टा करवा। मो चैनल को आपण मानक स्वागत। लर्न विथ विचिंद्र। थैंक यू। जय जगन्नाथ। चलतु आम आरंभ करवा। चलतु आम आरंभ करवा। ठीक अच्छे। चलतु चलतु फर्स्ट क्वेश्चन आंसर देवे। हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? अरिस्टोटल, हेरोडोटस, आर्किमिडीज, थियोफ्रास्टस। किए सठिक एक नंबर सठिक आंसर होची अरिस्टोटल। किए अरिस्टोटल। आपण माने जानछंती अरिस्टोटल is the father of political science as well as the zoology as well as the zoology। आपण माने निहात भाबरे जानि पारछंती कोन ना zoology टिके रुहंतु कलर चेंज करिया। तो के तो अरिस्टोटल होचंती के अरिस्टोटल होचंती हमर फादर ऑफ zoology एवं अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ also political science। कौन political science। हेरोडोटस इज द फादर ऑफ हिस्ट्री एंड थियोफ्रास्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बोलतो। East India Company had regulatory and controlling power in India under Regulating Act 1773, the Charter Act of 1793, the Charter Act of 1833, the Charter Act of 1853। को आंसर टी सठिक हबो? को ऑप्शन टी कोनतो को ऑप्शन टी सठिक हबो ना अंडर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 नहीं कि आपण माने जानिथिबे अंडर Regulating Act 1773 the Supreme Court of India was set up at Calcutta रे सेटअप होइतला। एवं जदि देखिबा हमें द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 रे कोन होइतला ना एक्ट ऑफ salaries for the staff and member of the board of control what we paid from Indian revenue। इंडियन रेवेन्यू द्वारा कोन करा होतला बोर्ड ऑफ कंट्रोल उनको द्वारा सैलरी दिया जाउतला स्टाफ मानक समस्त को। एवं सी रे देखिबा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 रे ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली पेड टू एन एंड। एवं आर्टिकल अंडर 1853 सेपरेट गवर्नर फॉर बेंगल वाज टू बी अपॉइंटेड। ठीक अछि। 1853 रे कोन होतला ना गवर्नर बेंगल पई सेपरेट गवर्नर कोन कराइतला अपॉइंट कराइतला अंडर the Charter Act of 1853। ठीक अच्छी। नेक्स्ट who become first governor in 1772 and first governor general in 1773 of Bengal। किए कहिबे कोनतो निश्चित भाबरे लॉर्ड विलियम बेंटिक, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग। किए हेबे कोनतो के किए कोनतो ना वारेन हेस्टिंग्स। किए वारेन हेस्टिंग्स। अपन मन जानथिबे वारेन हेस्टिंग्स कोन करतले ना डुअल गवर्नमेंट ऑफ बेंगल मध्य करतले एवं लॉर्ड विलियम बेंटिक द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मन रखंतु लॉर्ड कॉर्नवालिस को हमें कोनती फादर ऑफ सिविल सर्विस एवं जानी था तो इंडियन फादर ऑफ सिविल सर्विस होची सरदार वल्लभ भाई पटेल। लॉर्ड कैनिंग इज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। लॉर्ड कैनिंग होचंती कोन ना फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया जानि पारले ठीक अछि। करेक्ट आंसर होची कोन वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया was set off by the Regulating Act 1773, Indian Council Act 1858, the Charter Act of 1883 and the Government of India Act 1933। हमें पूर्व आलोचना मध्य करथिले द अंडर रेगुलेटिंग एक्ट 1773
कौन कराइतिला कालकाटारे द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेटअप कराइतिला। ठीक अच्छे बुझिपारे। नेक्स्ट ऑप्शन जीवा अकॉर्डिंग टू व्हिच आर salaries for the staff and members the board of control were to be paid from the Indian revenue। कौन सा इंडियन रेवेन्यू रे दिया इतला कौन तो इंडियन रेवेन्यू को एक्ट दिया इतला इंडियन रेवेन्यू को कौन तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को एक्ट अनुसार ना 80 चार्टर एक्ट ऑफ 1830 अनुसार 13 अनुसार समस्त स्टाफ मान को कौन करा बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा रेवेन्यू कौन करा सैलरी दे जाता। ठीक अच्छे पूर्व आलोचना मते करछंती। कौन तो हु इज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया यह मध्य हम पूर्व आलोचना करछंती के ना लॉर्ड के कौन तो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया होचंती लॉर्ड कैनिंग के लॉर्ड कैनिंग। ठीक अच्छे विलियम बेंटिंग तुम जानछंती वारेन हेस्टिंग्स में आलोचना करछंती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हेन द कैबिनेट मिशन प्लान प्रपोज्ड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया केबे कराइतला कौन तो May 16 1946 January 26 1947 November 26 1949 January 24 1950 केबे ना May 16 1946। जदि आपण मान को ए सेक्शन टी भल लागुची निहाती भाबरे आपण माने शेयर सब्सक्राइब एवं लाइक करंतु एवं सांग मान को पाखरे पहुंचंतु। ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन तो द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रपोज्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू जहाँ जानी जाइछंती पंडित लिखा आइछ माने आपण निहाती जानी जीवे सी राजगोपालचारी ना पंडित जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बी एन राव के ना पंडित जवाहरलाल नेहरू जानिथिबे निहाती भाबरे। नेक्स्ट कौन तो which schedule of the constitution is related to the allocation of seats in Rajya Sabha to the states the union territories कौन तो Rajya Sabha allocation of seats ना 4th schedule 5th schedule 6th schedule and 7th schedule कौन तो को schedule अनुसार ही परिबो कौन तो कौन तो को शेड्यूल अनुसार ना मोर को शेड्यूल अनुसार कहतु ना मोर एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा होउची हमर 4th शेड्यूल को शेड्यूल ना 4th शेड्यूल। तो 5th शेड्यूल रे कोन हितला कौन तो ना contains the provision relating to the administration and control of scheduled areas and scheduled castes तो क्या में SC and scheduled areas and scheduled tribes ठीक अच्छे। तो देखिबा 5th शेड्यूल कोन हेते जानि पारले एवं तापर देखंतु 7th शेड्यूल कोन हेतला कोनतो 7th शेड्यूल हेतला कोन ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट एवं कोनतो 6th शेड्यूल कोन हेतला कोनतो 6th शेड्यूल रे 6th शेड्यूल कोन हेतला कोनतो 6th शेड्यूल रे हमरो 6th शेड्यूल हेतला प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन आसाम मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके नेक्स्ट in which the following case the 6 rights guaranteed by article 19 can be suspended कौन तो आर्टिकल 19 अपन मन जानी थिबे कि आर्टिकल 19 जो लिखा है आर्टिकल 19 रो 22 पर्यंत हमें कौन कोनती ना राइट टू फ्रीडम कौन कोनती राइट टू फ्रीडम एवं
Article 19 is the protection of certain rights regarding freedom of speech. Okay, এবং যদি দেখিবা external aggression, যদি আমি দেখিবা external aggression তো কুহন্তু নিଶ୍ଚିତ ଭାବରେ external aggression କ'ଣ ହେଇଥିବ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଦେଖିବା emergency ଦେଖିବା ତ emergency ଅନୁସାରେ ତ କେବେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କୁହନ୍ତୁ। emergencyଟା ଆମର 352 article 352 to 360 ହେଉଛି ଆମର ଦେଖିବା ଯଦି emergency ତାହେଲେ ଆମର 352 is the national emergency ଏବଂ 356 is the state emergency এবং 360 is the finance emergency. Okay, ତ internal and external emergency ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ 619 ଆର୍ଟିକଲଟା କୁହନ୍ତୁ। ତ କୋଉଟା ଆନ୍ସର ହେଇପାରିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 1 and 3 only. Next, which part of the Indian Constitution mentions the Control and Auditor General? CAG କ'ଣ ହେଇପାରିବ Control and Auditor General। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ Control and Auditor General କିଏ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 148 ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ନା that should be a Control and Auditor General in India. Okay, next, Rajya Sabha was established on କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1 January 1948, 10 January 1950, 3 April 1952, 3 July 1956. Okay, option number C is the right answer. Which of the following committee recommended the establishment of Panchayat Raj system? Kiran Siliva committee, Khatar committee, Balwant Rai Mehta committee, none of these. Okay, na Balwant Rai Mehta committee is the right answer. Option number C is the correct answer. Okay, which of the following article cannot be suspended in any order in case of emergency? emergency रे को आर्टिकल ही था ना मत कौन तो फास्ट देखिबा आर्टिकल 15 to 20। आर्टिकल 15 कौन कहे ना prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth। आर्टिकल 20 कहे कौन कहे आर्टिकल 20 ना protection in respect of conviction for offenses। এবং आर्टिकल 17 मन रखंतु एटा कौन कहे ना abolition of untouchability, abolition of untouchability এবং जो देखिबा आर्टिकल 32 कौन कहती आर्टिकल 32 कहती कौन ना remedies for enforcement of rights conferred by this part the art कहती এবং যদি কইবা आर्टिकल 22 और 21 is the right answer. Okay, 20 और 21 होची कौन protection of life and personal liberty। ठीक अच्छी right answer होची कौन ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक अच्छी नेक्स्ट जीवा कहतु अकॉर्डिंग टू डैश द प्रेसिडेंट हैज द राइट टू टेक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। को आर्टिकल अनुसार ना आर्टिकल 72, आर्टिकल 120, आर्टिकल 143, आर्टिकल 171। कहतु आर्टिकल 72 कौन मन रखंतु आर्टिकल 72 होची पावर ऑफ प्रेसिडेंट to grant pardons etc. and to suspend, remit and commute sentences in certain cases। ठीक अच्छे राइट आंसर होचे कौन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होचे दिस क्वेश्चंस। तापर हम कहि सकते आर्टिकल 120 कोंतु आर्टिकल 120 होची लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट। आर्टिकल 120 होची लैंग्वेज यूज इन द पार्लियामेंट।
ठीक अच्छे आर्टिकल नंबर 173 is the right answer for this question. Next, dash of the constitution deals with center state relations. कहतु center state relations को ये कर दी परिबा में कहतु नियति भाबरे कहतु dash of the Indian constitution deals with center state relations. तो देखिबा पार्ट एक्स टा कते आर्टिकल ना आर्टिकल 244 टू 244 ए होची कोन ना पार्ट एक्स एटा कोहा छि कोन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हे करा छि पार्ट एक्स नेकी तो देखिबा पार्ट ता केते आंसर हबो कोहंतु दैट्स द कॉन्स्टिट्यूशन द सेंटर स्टेट रिलेशंस कोहंतु सेंटर स्टेट रिलेशंस टा कोटा अपन माने कमेंट माध्यम जणेबे मते सेंटर स्टेट रिलेशंस which article of the Indian Constitution talks about the provisions for the impeachment of the President of India. को आर्टिकल अनुसार कहतु आर्टिकल नंबर 51 ना आर्टिकल 54 आर्टिकल 61 आर्टिकल 63 कोटा आर्टिकल 60. Next, Rajya Sabha enjoys more power than Lok Sabha in case of which of the following केसेस कहतु को केसेस पाई एटा आपण आंसर देबे आपण को पाई करैला क्वेश्चंस इन इंडियन पॉलिटी व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज सुप्रीम के इन इंडियन पॉलिटी व्हिच इज ऑफ द फॉलोइंग इज सुप्रीम के ना constitution is supreme. Okay, in which fund all revenue debt recovery received by the union government goes. कोरा कोंतु ना consolidated fund, contingency fund, both A and B, none of these. के परिबो option number A is the right answer. Consolidated fund. Next, which of the following article of the Indian Constitution provides the president the authority to dissolve the Lok Sabha? Article 82, Article 84, Article 85 ना Article 90 कोटा कहंतु कोटा ना Article 85 is the right answer. ठीक अच्छी जदि हम देखिबा Article 82 देखिबा Article 81 जदि देखिया प्रथम रे 81 टा साधारणतः भाबरे कोहा आइछि लोकसभा पई कोहा आइछि एवं Article 79 for the constitution of the parliament. Article 90 कोहा जाइछि vacation and resignation of and removal from the office of the deputy chairman. ठीक अछि. Next, the Indian Constitution has borrowed the ideas of the system quasi federal system. कोड आछि कोंतो कोड आछि ना हमर USSR constitution ना Canadian constitution ना Australian constitution ना German constitution. तो देखिए हम USSR constitution हमर कोन आछि कोंतो USSR constitution अनुसार जो देखिबा USSR constitution अनुसार ताहाले fundamental duties and 5-year planning तो देखिबा में ऑस्ट्रेलियन जो देखिबा ऑस्ट्रेलिया अनुसार ना concurrent list language of the preamble एवं provisions regarding trade, commerce and intercourse, joint section of the two houses of the parliament एगा सब कोन आछि ना ऑस्ट्रेलिया रो आछे. जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन रो कोन आछि कहंतु जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन रो आपण को पाई रहिला जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन रो कोन आछि अपन माने कमेंट माध्यम जणैबे. एवं द राइट आंसर होछि कोटा ना कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Canadian constitution कोन आछि ना quasi federal system from the okay. Next, the third schedule of the Indian Constitution deals with third schedule कहंतु कोटा third schedule रे आसीबो third schedule रे कोटा आसीबो कहंतु third schedule रे
ଆସିବ ହେଉଛି କ'ଣ ଫର୍ମସ୍ ଅଫ୍ oath and affirmations of the କ'ଣ union ministers, candidates for election of the parliament, members of parliament, judges of the Supreme Court and High Courts, and controller and auditor general. କ'ଣ ଆସିବ ନା oath and affirmations, ministers and judges. Next, the government of India was forced to create the first linguistic state is कोटा कहतु एटा परीक्षा थर पड़ीला तो देखिया पे गले किए ना आंध्र प्रदेश. The right answer. Next, which article is termed Dr. B.R. Ambedkar as heart and soul of the constitution? कोटा कहजे article 32, article 24, article 33 and article 21. आर्टिकल 32 कौन कहती ना आर्टिकल 32 को हमें कहती कौन ना सोल एंड कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, आर्टिकल 24 टा कौन कहाई ना प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा. आर्टिकल जो 33 को हमें देखिबा आर्टिकल 33 कहिछि कौन ना पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द कन्फर्म्ड बाय द दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन एंड प्रोसेस एक्सेट्रा. एंड आर्टिकल 21 ए कहिछि कौन ना right to education. कौन right to education. Okay, article 32 is the right answer for these questions. ठीक अच्छी. Next जीवा, by which process the president can be removed from the office for the violation of the constitution? को अनुसारे ना impeachment process को अनुसारे ना impeachment process. प्रोसेस अनुसार इम्पीचमेंट प्रोसेस. ठीक अच्छी. नेक्स्ट जीवा, which one of the following formed the basic premise for the developing the Indian